Welcome back, guys. In this video we are covering comprehension section 3. So let's start our video. Harold, a professional man who had worked in an office for many years, had a fearful dream. Harold, एक पेशेवर आदमी जो कई सालों तक एक दफ्तर में काम कर चुका था, उसने एक दार भरा सपना देखा. In it, he found himself in a land where small slug-like animals with slimy tentacles lived on people's bodies. इस सपने में उसने अपने आप को एक ऐसे देश में पाया जहां छोटे स्लग जैसे जीव जो चिपचाइप टेंटिकल्स वेल्ड लोगों के शरीरों पर रहते थे. The people tolerated the loathsome creatures because after many years they grew into elephants, which then became the nation's system of transport, carrying everyone wherever he wanted to go. लोग इन नफरत अंगीज जीवों को बर्दाश्त करते थे, क्योंकि कई सालों बाद ये हाथी में बादल जाते थे, जो फिर देश का सफर प्रणाली बन जाते थे, सबको जहां जाना होता ले जाते. Harold suddenly realized that he himself was covered with these things, and he woke up screaming. Harold को अचानक एहसास हुआ कि वो खुद इन जीवों से ढाका हुआ था, और वो चीख मरते हुए उठ गया. In a vivid sequence of pictures, this dream dramatized for Harold what he had never been able to put into words. इस सपने ने Harold के लिए एक जीवंत छवि का क्रम दिखाया, जो उसने कभी शब्दों में बयां नहीं किया था. He saw himself as letting society feed on his body in his early years so that it would carry him when he retired. उसने देखा कि कैसे उसने अपनी जिंदगी के शुरुआती सालों में समाज को अपने शरीर पर खाने दीन दिया, ताकि जब वो रिटायर हो, तो वो उससे संभल सके. He later threw off the security bug and took up freelance work. बाद में उसने सिक्योरिटी बग को छोड़ दिया और फ्रीलांस काम शुरू कर दिया. Now based on this explanation you can start questions and guessing which answer is correct.
Thanks for watching. We are coming with more questions and their solutions and explanation. Please like, share and subscribe for more videos.